Assalamu alaikum my dear friends and students. In the last video we discussed alphabet and alphabets. So alphabet is a language, and in English language we are having 26 letters, 5 vowels and 21 consonants. And alphabets means when we are using more than one language. जैसे if we are talking about English and Urdu language, that means we are talking about alphabets. अब alphabets और 26 letters के बाद आता है word. So let's understand what is a word. A collection or a group of letters with some meaning is called a word. Letters हमने already देखे लास्ट वीडियो में कि 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कंसोनेंट्स होते हैं. तो उन कुछ लेटर्स को हम जोड़ते हैं और कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं. ठीक है, जैसे लेटर यहाँ पर 3 है, BOY बॉय, PEN पेन. ठीक है, अगर हम कोई वर्ड लेते हैं A+C+N, तो ये कोई वर्ड नहीं बनता है. If we join these 3 letters, we don't get any meaningful word. So ये वर्ड नहीं कहलाता है. A collection or group of letters with some meaning is called a word. या हम ऐसे भी कह सकते हैं a meaningful group of letters is called a word. तो words जो है उनके different kinds है. root words, rhyming words, compound words, synonyms, antonyms, prefix, suffix, metaphor, simile, homonyms and homophones. So in the next video, we will discuss about root words. Thank you.